The 4th of July event was held by Pakistani American Association of New York. Consul General of Pakistan Aisha Ali and the other community leaders spoke on this occasion. Large number of Pakistani community participated. Flag ceremony was also held. There was a lot of tasty food. Please watch the report. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. To begin with the holy name of Allah subhanahu wa ta'ala. Begin the program on behalf of Pakistani American Association of New York, PANI, behalf of APAG, Amin Ghani is here, and ICNA Relief, Mahmoud Siddiqui, and Mr. Khalid as well. Coordination with them. This event is organized for the community in appreciation of 4th of July, America's 245th Independence Day. So we began the program with the Talafte Qur'an Pak by Imam Tahir. He's also a chaplain for NYPD. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. نعت شریف کے لیے اصغر چشتی صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. Now I'm requesting all the members, honorable guests, please stand for our pledge allegiance to the flag of the United States of America. Please repeat after me, please, or say it together. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. لیکن آج میں پانی کی سائڈ سے کھڑا ہوں. میں اکنا کا تعارف کرانے کے لیے جو ہے وہ خالد جاوید صاحب ہمارے کوارڈینیٹر ہیں آؤٹ ریچ نیو یارک میں. خالد جاوید صاحب سے میں کہوں گا کہ جو کام ہے اکنا کے تھوڑا بتائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو 4th of July کے حوالے سے سب کو انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اکنا ریلیف کے جو مختلف پروگرامز ہیں یہاں پہ ان کے بارے میں تھوڑا سا کہ ہمارے یہاں ہنگر پریونشن بیک ٹو اسکول پروگرام ویمن ٹرانزیشنل ہوم اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس وقت سب سے جو ضرورت ہے ہمارے اس سوسائٹی میں پرٹیکولرلی اس کے لیے بھی اکنا ریلیف جو ہے وہ آن لائن سروسز جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. I would like to wish everyone a happy and safe Independence Day. Americans are known as a country that welcomes
to its shores all kinds of people. That is what makes America great. On July 4, 1776, Declaration of Independence established the principle that all men are created equal. Transforming that principle into a reality for all people has been the struggle of our nation for nearly 250 years. God bless America and Pakistan Zindabad. Now let's just party, enjoy the barbecue, and happy 4th of July. आज मुझे पहले से वार्निंग दे दी गई थी कि आपने इनकार नहीं करना, तो मेरी मजाल नहीं है कि ढिल्लू के होते हुए और पुलिस ऑफिसर के इधर होते हुए मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं इनकार कर सकूं। बहुत शुक्रिया। पानी के बारे में जैसे अपना मौलवी साहब ने कहा कि ये एक तंजीम है और अच्छी तंजीम है, आज वैसे रिकॉर्ड पे ये बात भी आ जाए जो मेरी आदत नहीं है कि ये और हम इकट्ठे सफ़र कहीं कर रहे थे, ये करना कुछ चाहते थे, तो मैंने बिल्कुल ये नाम भी इनको दिया था और कहा था कि आप एक तंजीम कायम करके कोई अच्छा काम करें। Am I right? पानी जल्दी बह जाएगा। हाँ, नहीं फिर पानी दे के शर्म भी तो आती है ना। पानी के बगैर जिंदा भी रहता है। चलिए खैर, तो भाई बात यह है कि इन्होंने भी, मेरे दोस्त ने, मोहब्बत ने भी ये कहा है कि इस मुल्क में रहना है, और बात भी दुरुस्त है। हमारी अगली नस्लें जो हैं अब वो यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। हर आदमी ये सोचता है कि मैं मुआशी हालात अपने ठीक करके कमा के वापस चला जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मैंने इस 50 सालों में आते हुए तो लाखों और हज़ारों में देखे हैं, जाते हुए बहुत ही कम परसेंटेज देखी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस मुल्क में रहना है तो यहाँ के जो कवानीन हैं, जो यहाँ की लाइफ है, जो यहाँ के मतलब के नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करना भी हम पर जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। खाली सिटीजनशिप लेकर या पासपोर्ट लेकर उसे मलमल के कुर्ता पहनकर लाहौर के एयरपोर्ट में जगमगाता हुआ पासपोर्ट दिखाकर रोप डालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है कि यहाँ के जो तकाज़े हैं, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें आप अपना हक मनवाने की कोशिश करें। वो हुकूक जो हैं जब तक आप वो नहीं लेंगे, खाली ये पासपोर्ट से और सिटीजनशिप कार्ड जो हैं, या यहाँ से पाकिस्तान बगैर वीज़े के चले जाना जो है और पासपोर्ट को जेब में कस्टम ऑफिसर्स को दिखाना कि हम ये भी हैं, इससे कोई फ़ायदा हासिल अभी तक ना हुआ है, ना ही आइंदा होगा। क्योंकि जिस कस्टम ऑफिसर को या एयरपोर्ट के ऑफिशियल को आप ये पासपोर्ट दिखा रहे हैं, वो दिन में कम से कम 600 पहले देख चुका होता है। फ़्लाइट्स उतरती हैं और ये सब सिलसिला रहता है। कहने का मतलब मेरा जो है वो ये है कि ये सिंबॉलिक सिटीजनशिप की बजाय हमें ये चाहिए कि हम यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। और ये भी मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में अपना असर व रसूख बढ़ाना, अपने ताल्लुकात पैदा करना, अपने लिए जगह बनाना पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आसान है। वहाँ पर अगर आप बड़े ज़िम्मेदार हैं, फ्यूडल लॉर्ड हैं, MNA के करीब के हैं, तो फिर कहीं आपकी कोई रसाई है। आम आदमी की वहाँ रसाई वोट के वक्त होती है, उसके अलावा नहीं होती। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि इसमें लोग जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो सियासतदान हैं, वो आपको याद रखते हैं, और याद रखने के बाद ये फिर हम पर मुनहसर है कि हम अपनी इज्जत कितनी कराते हैं, कितना वक़ार पैदा करते हैं, क्या सिलसिला करते हैं। खाली घरों के अंदर या लिविंग रूम में किसी कांग्रेसमैन की फ़ोटो लगवा कर आने व पाकिस्तान से आने वाले पर ये रोब झाड़ना कि मैं अमेरिकी निज़ाम का हिस्सा भी हूँ और बड़ा असर भी है, उससे भी कोई फ़ायदे अभी तक नहीं हुए हैं। तो बेहतर यह है कि यहाँ के इस मुल्क के जो तकाज़े हैं, इस मुल्क की जो जिम्मेदारियाँ हैं, इनको आप पूरा करें, और पूरा करके आप अपनी शनाख्त और अपने जो आबाई वतन है उसकी आप शनाख्त जो है उसको आप पूरा करवाएँ। और वो ये नहीं है, यहाँ के लोग इस बात से भी आपको याद रखते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी आबाई शनाख्त क्या है, और आबाई शनाख्त जो है उसको कायम रखना यहाँ के कानून में कोई जुर्म भी नहीं है, बल्कि उस चीज़ को पसंद किया जाता है। तो जब पसंद किया जाता है तो फिर आखिर सिर्फ पासपोर्ट और सिटीजनशिप तक रहकर जो है वो करना ठीक नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी आम तौर से डेमोक्रेट होते हैं। आपके प्राइमरी के भी जो यहाँ इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी आप खुद पाकिस्तानियों की आबादी को गिन लीजिए, पाकिस्तानी अमेरिकन्स की, और पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने जितने वोट डाले हैं उसको गिन लीजिए और हिसाब आप खुद कर लीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा
کہ ہم کتنے کم لوگ اور کتنی کم اہمیت ہم ان الیکشنز کو دیتے ہیں. اگر آپ اس سیاسی سسٹم کو اہمیت نہیں دیں گے تو سیاسی سسٹم آپ کو بھی اہمیت نہیں دے گا. شکریہ. کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. Leadership, ladies and gentlemen, today is the renewal of our American dream. We came to this country for a better future, for opportunities in education. Alhamdulillah, we have all accomplished that. Our children have accomplished that, and now it's our turn to give some to the country. Thank you very much. Happy 4th to everyone. Assalamu alaikum. Have loyalty to both the countries. I'm living here. I'm loyal to this country 101%. And we should teach our children the values of this country where they were born. سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ 4th of July منا رہے ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہاں کی ٹریڈیشن ہمیں اپنانی چاہیے، اور مطلب اپنے انہوں نے ٹھیک کر ہیں سارے بچوں کو بھی انوالو کریں اور خواتین کو بھی لائیں، اور پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بڑا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس پولیٹیکل سسٹم میں حصہ لیں اور اپنے آپ کو منوائیں. اگر ہم پولیٹیکل سسٹم میں حصہ نہیں لیں گے، ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور جو لوکل کمیونٹیز ہیں، اسکول بورڈ ہیں، کمیونٹی بورڈ ہے، اس میں کام نہیں کریں گے، ہمیں کوئی نہیں جانے گا. Excellency, leadership of Pakistani community, on behalf of my chairman, Mr. William Shahzad, Pakistan Christian Association, and I being the Secretary General of Pakistan Christian Association, I wish all of you a happy 4th of July. آج کے موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ میں، جیسے کہ مجھ سے پہلے اسپیکرز نے کہا کہ ہم امریکہ میں رہتے ہوئے ہمارے دل جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں وہاں پہ، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں ہم سب کو دکھ ہوتا ہے تو آپ یقین کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں، اور ہم اتنا ہی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں وہاں پہ. جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ دھماکے ہونا یا اور اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوئے. میں ایک مختصر طور پہ صرف بات کروں گا جو شاید اگر کسی کو ناگوار گزرے تو میں معذرت کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ پہلے آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں ایک مسلم فیملی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور ان کو قتل کیا گیا. تو وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوئے، اور وہاں کا جو قومی پرچم ہے اس کو سرنگوں کیا گیا اسی دکھ کے موقع پر. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ سب کو ہیپی 4th of July. تھینک یو. Honorable Consul General of Pakistan, Mr. my all the guests and leaders of community, happy 4th July and Assalamu alaikum. آزادی بڑی نعمت ہے. یہ اتنی نعمت ہے دنیا میں کہ انسان
उस वक्त पता चलता जब इंसान गुलामी में ज़िंदगी बसर करता हो। मेरा तल्लुक़ क्योंकि कश्मीर से है और मैं थोड़ा सा इज़हार करता हूँ अपनी कश्मीरी बरादरी, कश्मीरी अवाम के लिए कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत जदोजहद की, मगर अभी तक हमें कामयाबी नहीं नसीब हो सकी। तो आज़ादी अभी तक हमें नसीब नहीं हुई और मैं अपने तमाम दोस्तों भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि दुआ भी करें और हमारी मदद भी करें। ये जो कॉलोनियल एवेन्यू बना है मुझे बहुत खुशी है, बहुत फख्र है। ये लिटिल पाकिस्तान बना है, इसका नाम है। मगर ये भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान कैसे बना। ये पहले हम कश्मीरी यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर डेरे डाले, उसके बाद पाकिस्तानी भाई हमसे शामिल हुए और हमने उनको एक्सेप्ट किया। रेहान फ्यूनरल होम ने जिस तरह किरदार अदा किया है उसके वाकिफ़ हैं हम सब के सब। और ज़फ़र भाई माशाल्लाह जो है मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि रेहान फ्यूनरल की नुमाइंदगी करें। और जैसा मैंने अब जिक्र किया कि हमारी तदफीन अब यहीं होनी है तो राब्ता इनसे ही होना है। दुनिया में अगर सबसे हकीकी चीज़ कोई है वो मौत है। Thank you all for coming. Members of the services, wish everybody a safe and happy holiday and hope you're happy with the day. कि हमें यकीनन इस मुल्क का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस मुल्क में आने के बाद इतनी आज़ादी हमने ले ली है, हासिल कर ली है और इस मुल्क ने हमें दी है कि हम जो चाहे किसी बारे में कह सकते हैं, चाहे वो हम बजानिब हो या ना हो। और जिस ज़माने में आया था उस ज़माने में इतनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी लोगों में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन साल ब साल बढ़ती जा रही है और लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम का जो है ना वो रोल अपना अदा करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत से पाकिस्तानी ख़वातीन हो या लड़के हो या बच्चे हों वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन हम पाकिस्तानी इस मुल्क की खिदमत करेंगे और इसके मुल्क की रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। All right. So brothers are here for the community. We appreciate their services. It's also part of the Pani as well. And it's part of the Pani board and helping the community. Musa, can you come here as well, please? These are our volunteers. We want to acknowledge them. Zain, Musa, Hamza, can you please come here, guys? We appreciate the services. They're always cooking our food for us. We want to give them a big hand. Thank you for your services, guys. Always here helping us. We do need the volunteers. It's because of them the food is always here for us. So they're always cooking. We got Hamza there, Musa's there, Akil Chaudhary, Chima, Zain. Thank you one more time. Give that big hand, please. Thank you, guys. Akil, you want to say happy? सब भाइयों को सबकी तरफ से 4th ऑफ जुलाई मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। हम इधर रहते हैं तो ईद भी मनाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ईद भी ऐसे ही मनाएंगे जैसे बाकी हम अपने त्यौहार मनाते हैं। ईद भी हमारा एक त्यौहार ही है तो इंशाल्लाह हम ईद भी ऐसे मनाएंगे, कोई मसला नहीं। तो सब भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो 4th ऑफ जुलाई की। और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया तो हमारी हौसला अफजाई की। तो हम बहुत मशकूर हैं आपके कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। शुक्रिया जी। So guys, please give a big hand to Miss Aisha Ali, Consul General Pakistan. God bless you and God bless your energy. You're always here for the community. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum. Wish everyone a very happy 4th of July. आप सबको बहुत मुबारक हो। As I said earlier, Mia Sahab, at an event where I was in the morning, I said, जो आखिर में आता है उसके लिए एक बड़ा challenging किस्म की situation होती है, because everything of importance has already been said. But it's such a unique honor to be here. और आज मैंने सारा दिन ये जो events हैं इनके बारे में जो हमारी community ने organize किए, I thought about them. And when I come to Coney Island, it's like coming home. तो यहाँ पर एक बहुत यूनिक ब्लेंड मैंने देखा अभी। हमने तिलावत से शुरू किया, हमने नात पढ़ी और उसके बाद द प्लेज ऑफ एलिजेंस। सो यहाँ पर सारा दिन बहुत बात हुई है असिमिलेशन की और कल्चर्स का, ये मेल्टिंग पॉट है ये मुल्क जो है।
तो assimilation as it happens हम उसको देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तलावत, फिर नात, उसके बाद डिफरेंट हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन्होंने आके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया. So the values of this country are already being imbibed by our community. यहाँ पर जैसा कि सबने बहुत जिक्र किया कि बोलने का और आज़ादी इजहार आज़ादी की मुकम्मल हमें यहाँ पर आज़ादी है. So the assimilation process that we talk about is already here. The only thing that I find lacking, slightly lacking in our events is the presence and the participation of our young people. वो शायद मसरूफ़ हैं, कुछ और उनकी एक्टिविटीज़ हैं या उनको हम इन एक्टिविटीज़ की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते. We need to change that. बट इस चेंज की बात भी हम आपस में करते हैं. इट्स लाइक प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड. हम सबकी एक ही राय है इस सिलसिले में कि बच्चों को होना चाहिए और उनकी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है तो वो बेहतर होती है, लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग अमंग्स्ट आवरसेल्व्स. मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान इन न्यूयॉर्क क्या कर रहा है, कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम अपनी यूथ को अपने पाकिस्तान के कल्चर के बारे में इंट्रोडक्शन भी करवा रहे हैं और उनको इससे फेमिलियराइज भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं. So I'll begin again at the beginning. Another unique feature of this event is that so many of Pakistani American organizations have come together to celebrate 4th of July, which is again unique because we only talk about doing things individually और हम एक दूसरे से शिकवा भी करते हैं कि जी हम individually काम कर रहे हैं. But today we have Pani here, we have APPAC, Pakistani American Advocacy Group is here, Mia Saab is here, Kashmir is being represented, which is a very important cause for Pakistan. So thank you. Our Pakistani Christian communities here, Colonel Saab from Long Island, so many other people. And it is truly wonderful and truly unique. So as a community and as Pakistani Americans, you are growing. I think ये आपकी maturity का एक symbol है. और अब हालात, I think as you live in this country, your children live here, they are being born and raised here. So things are changing and things are actually looking up for our community. We also, another important theme that we keep talking about, और हम एक दूसरे से उसके बारे में बहुत बात करते हैं, वो है political participation. But I see a lot of light at the end of this tunnel as well. हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि things are beginning to change and they're going in the right direction. So we are increasingly becoming as a community aware of the importance of political participation. सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स आपको देना चाहती हूँ. हमारी कम्युनिटी का साइज़, एस्टिमेटेड साइज़ इज़ 1 million. नॉर्थ ईस्ट में एस्टिमेटेड साइज़ 500,000 पीपल. अगर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करूं तो हाईएस्ट इलेक्टेड जो हैं हमारे कनेटिकट से एक स्टेट सेनेटर है, उनका नाम है डॉक्टर साउद. और एक और जो खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी एक खातून फ्रॉम लाहौर, हर नेम इज़ शमा हैदर, एंड शी हैज़ वन द डेमोक्रेटिक प्राइमरी फ्रॉम न्यू जर्सी for state assembly. So inshallah we're very hopeful that soon we will see her as an assemblywoman from New Jersey. Another important development that has taken place is that we have for the first time a Pakistani American federal judge who has been appointed by President Biden. So एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी political participation कम है. मैं बिल्कुल agree करती हूँ, but we also need to highlight the successes. Recently, our embassy in Washington DC organized a program. It was a webinar for the Pakistani American elected officials. और वहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकन ऑफिशियल्स जो कि इलेक्टेड हैं, वेस्ट कोस्ट के भी थे, ईस्ट कोस्ट के भी थे, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया. सो तादाद, आई वुड एग्री विद यू, इज़ स्मॉल बट वी ग्रेजुअली गेटिंग देयर. और इसमें APPAC, बाकी पाकिस्तानी अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है.
لیکن اس حصے کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو مزید آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. Plenty of light at the end of this tunnel as your children go to college here, as your children get jobs, become mainstreamed. تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے, کیونکہ جیسے سب نے کہا کہ امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کو, اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے, آپ ہارڈ ورکنگ ہے, یو آر آنیسٹ, یو ہیو ٹینیسٹی آف پرپز, تو یہاں پر اچیومنٹس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس ملک نے بہت ساری ملکوں کے لوگوں کو بہت زیادہ ترقی یہاں پر دی ہے, اور یہ ایک اس ملک کی خصوصیت ہے. اب آپ لوگ سب یہاں پر آئے ہیں, یو آر پیپل آف پاکستانی ہیریٹیج, یو شوڈ بی ایکسٹریملی پراؤڈ آف دیٹ, بیکاز پاکستان اور امریکہ دو ایسے ملک ہیں جس کے بارے میں اکثر یہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, بٹ وی شیئر اے لاٹ آف کامن ویلیوز ود دس کنٹری. ہمارا ملک ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد امیگرینٹس کی بھی ہے, جو کہ 1947 میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب وہاں ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا, and they came to Pakistan and they made Pakistan their home because this was what they wanted as Muslims living in India. تو انہوں نے بھی ایک جذبے کے ساتھ اس ملک کو بنایا. آج پاکستان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت سارے سیکریفائسز دیے اور بہت ساری قربانیاں دی, ان کی وجہ سے آج یہ ملک قائم و دائم ہے. اور ہماری جو میں اگین آئی گیو این ایگزامپل آف مائی اسائنمنٹ ان انڈیا, جہاں پر جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا, میں نے 4.5 سال تک دلی میں ایز اے پولیٹیکل کاؤنسلر اپنے ہائی کمیشن میں کام کیا. اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو ملک ہے اس کی وجہ سے آج ہم سب اس دنیا میں فخر کے ساتھ اپنا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں. جیسے کہ ظہور صاحب نے فرمایا کہ کشمیر کے عوام جن کو یہ آزادی ابھی حاصل نہیں ہے, یہ ایک درد ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں, کیونکہ فار اے لانگ ٹائم وی آلسو ایز مسلمس آف سب کانٹیننٹ وی ڈونٹ ہیو اے ہوم لینڈ آف آورز. سو ہمیں اس چیز کی ایک بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے, اس کا ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے, اور جو کامن ویلیوز ہم اس ملک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وی شوڈ بی پراؤڈ آف دوز. اٹ از اے میلٹنگ پاٹ, یہاں پر آپ سب نے رہنا ہے, اور یہاں جس طرح سے آپ ترقی کر رہے ہیں اٹس گڈ فار پاکستان ایز ویل, بیکاز پیپل ٹاک اے لاٹ اباؤٹ دا پولیٹیکل ریلیشنشپ. ایز اے کونسل جنرل مائی فوکس ہیز بین آن دا کمیونٹی, obviously that's my duty and that's my job. اینڈ کمیونٹی کے حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آگے جاتے ہوئے جیسے آپ لوگوں کی یہاں تعداد بڑھے گی, جیسے آپ کے بچے یہاں پر امپورٹنٹ پوزیشنز میں اینڈ پوزیشنز آف رسپانسبلٹی ہولڈ کریں گے, تو دس از آلسو گڈ فار پاکستان US ریلیشنشپ ایز ویل. یو آر اے برج بٹوین پاکستان اینڈ دا US. The stronger you are, the stronger will be the relationship between the two countries. So I wish everyone, all Pakistanis, all Pakistani Americans, I wish you a very happy 4th of July again. Or before I stop talking to you, I would also at this platform want to highlight that Pakistan and US have been long-standing friends and partners. Or a recently jo important development which all of you should know is that US government has given 2.5 million doses of Moderna vaccine to Pakistan. We're very grateful to the government and people of Pakistan, to the people of the United States, and together Pakistan and United States remain committed to fighting this global pandemic as partners. We look forward to a stronger partnership with the US under the Biden presidency. I'm very grateful to all of you once again for listening to me, and continue to have fun. Thank you so much. Thank you. I would like to acknowledge our local TV channel Kavish, Mr. Mir, our senior member here, been here in the community a long time. Mr. Mir, can you come on the podium quick for 1 second for acknowledgement, please? Thank you for your services. You've been out there for our community. Mr. Awan, you all, Arshad Awan Sahab, thank you. You're always there for us, covering a lot of events, sometimes free of cost. Thank you. Say a few words before we flag raising ceremony. Thank you very much, Begum. Happy 4th of July, everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. We'd like to acknowledge that all the media friends are here. Muhammad Farooq, thank you. Awaz, representing Mohsen Zahid Bhai, thank you. Always here for the community.
and for me, especially representing me and helping me a lot, like a big brother, Muhammad Farooq, Mohsen Zahir is there, Mawad Siddiqui. Thank you for your services, Fahim, Mr. Fahim Mia from Wasa TV, Niazim, our elder brother, keeping the community united. Thank you for your services. It just because of the media representation, making us look good in the community. Thank you being a part of the community. Thank you always here for us. Miss Aisha Ali requesting you to please come for the flag raising ceremony, requesting the host committee. चलो चलो ये चंगा गया हां चंगा हो गया चंगा हो गया फिक्र को नहीं रहा मैं नहीं पहुंच गया जी पहुंच गया दुआ भी भाई कई करेंगे अच्छा यार इसको चलो चलो एक सेकंड मावेज मावे एक बार स्टैंड चलो चलो Happy 4th July. Happy birthday to America. Happy birthday. All right, take some photos and give everybody else an opportunity to, please. Independence Day. 245. 267. 245th. 245. 245. 245th. 245th. Yes, you got it. नहीं ये पहले अगर नहीं बताया